ये control law ही है controller when you give some command, right? कि इस velocity पे body should be on this velocity, it should travel with this velocity. So this is a required command, required specification. If it is less or more than that required velocity or that required variable, then you have to compensate, right? That is actually control, right? So compensation is actually the modification of the system dynamics to satisfy the given specification, right? So that is the definition. And one more thing, you are very fortunate that is all numbers you haven't to write, right? So you don't need to write these all numbers. So this is a good thing for you, right? So the approach to control system design and compensation used in this course, like root locus, we will do that, frequency response approach somehow, and state space approach. So such control system, uh, these are design and compensation to be present in 6, 7, 9, and 10 chapter in Ogata, right? The PID based compensation approach is covered in chapter 8. So in the actual design, for example, like we want to control design of control, right? Or compensator, we can call compensator. So to use an electronic, pneumatic, or hydraulic, कौन सा हमने use करना is a matter of nature of the control plant. For example, if control plant involves flammable fluid, then we have to choose pneumatic components, right? अगर flammable है, there's a risk of explosion, then we have to choose pneumatic components, both compensator and an actuator. In compensator, the controller, and actuator, the motor, or this in furnace, the heater, right? That is actuator. To avoid the possibility of sparks. If, however, no fire hazard exists, then electronic compensators are mostly commonly used. We use electronic compensators, like in the circuitry. You have to first design the control law, and then if it's your computer, or if it's Arduino, or you have to make a stand-alone, for example, PCB circuit, right? So that will be used for electronic compensator. So in fact, we know that transform non-electric signal into electrical signal, mean mechanical signal which is not electrical, into electric signal is very easy, and simplicity of transmission because and increased accuracy in that case, and reliability, ease of compensation, and the like. So mechanical component change करना फिर एक मुश्किल होती है, और ना कि आप कंट्रोल लॉक को, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक है तो आप कंट्रोल लॉक को चेंज करें या अपने प्रोग्राम को चेंज करें. So it's very easy, reliable, and flexible also, right? So that is the. So we now, when we design control or control systems, we have some performance specifications, which are to perform specific tasks. The requirement imposed on the control system. Whatever the requirement, like for example, एक तो आप command देते हैं ना, you want to give command, whatever the command, like heating or velocity or acceleration, you have to follow that, right? So requirement क्या वो एक अगर जल्दी, for example, if your system is so quick, you need to have a fast response. So that is the requirement, right? या you have steady state errors में काम हो, right? So ये भी requirement है. So these are some requirement imposed on the control system these are called performance specifications, right? So and the specification may be given in terms of transient response. It will be better that I would draw it. Once I have a camera, then I would draw and tell you the transient response. I think I discussed this initially in first class, right? First or second class. So the specification may be Abbas, Atik. Yes, sir. So transient response, like when you give command, right?
another requirement of control system है stability, absolute stability, Okay, sir. stable है यानी binary stable है कि नहीं stable, सही है. Response time यानी relative stability. ये रिस्पॉन्स टाइम क्या बताया कि क्विकली आपकी जो ट्रांजिएंट जो वेव्स है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आपका क्विकली डाइज आउट हो जाए और रिस्पॉन्स जो है ना इन इनपुट जो देते हो और वो सिस्टम को और सिस्टम से आउटपुट जो निकलता है वो जो अचीव कर लेता है वो स्टेडी स्टेट में इलाके में एरिया में पहुंच जाए. वी विल स्टडी दिस इन द नियर फ्यूचर. सो दैट इज रिस्पॉन्स टाइम. Tolerant error, which is usually the steady state error, वही जो steady state usually input को हम perfectly achieve नहीं कर सकते. That is called there is error. Response का और input का आपस में फर्क होता है. तो that is called steady state error. So जैसे डेंटल में रोबोट डेंटल में ये इस्तेमाल होता है. पियानो में मुख्तलिफ कंट्रोल सिस्टम में जो आप एरर होता है और एरर क्या है. स्टेडी स्टेट मीन to follow the reference input, right? There is error between the actual and the reference input. So then we have general requirement reliability, flexibility, or repeatability. Means control system ऐसा design करेगा flexible है. I mean you can change it. If it is like I told you electronic, right? Electronic compensator, electronic control law, you can easily change this according to requirement. And repeatability के आप इस control you have designed that control system which if ये एक task करें और वो दोबारा से task करें वही results आप almost वही results आए, right? That is repeatability. सही. So some are the cost and maintenance also. So system compensation. Setting the gain is the first step. ये gain हम पढ़ेंगे. We will this is a term gain. That is the first step in adjusting the system for satisfactory performance. So in this system compensation, meaning that control law, right? To have a control system design. So in many practical cases, however, the adjustment of gain alone may not provide sufficient alteration of the system behavior to meet the given specification. कभी-कभी gain काम भी नहीं करती ना, कि आप इसको not to provide sufficient alteration. आप change करते रहते हैं ना, आपको given specification behavior नहीं देती. As is frequently the case, increasing the gain value will improve the steady state behavior. ये हम पढ़ेंगे जब आप gain को बढ़ाओगे. ये भी आपको पता नहीं है अब numerical values में, I mean polynomial में, numerator में, denominator में कुछ terms होती हैं, right? उसके साथ एक k value, k gain value होती है. अगर आप उसको change करते हैं, improve करते हैं, then steady state behavior पे improve हो जाती है. But will result in poor stability. आप system का आपका खदशा होता है, the risk of poor stability, right? So it is then necessary to redesign the system. आप उसके parameter को change करते हैं. एक parameter को you have to specify one parameter and change accordingly and see the result, the response. Okay? To alter the overall behavior so that the system will behave as desired. जो आपको required है, right? कि input दे रहे हैं आप जो required चाहिए आपको, वही input को follow करें, right? कि required पे क्या चाहिए आपको. अगर उसमें have difference है, then you change the one parameter and also all these gain values. So gain is a setting, is the first step in adjusting the system for satisfactory performance. I mean the control system, right? So such a redesign or addition of suitable device is called compensation. ये process compensation कहलाता है. And a device जो कि insert कर लेते हैं into the system for the purpose of satisfying specification, mean वो जो required specification, requirement जो होती है, is called compensator. In compensator is actually a controller, right? Compensator. So the compensator compensates for deficient performance of the original system. So ये generally एक dynamic system है. ये बात हमने नहीं किया था ना? No, sir, नहीं किया. अच्छा, ये एक डायनामिक सिस्टम है. आपका ये मॉडल है. I mean ये एक सिस्टम है. ओरिजिनली फिजिकल सिस्टम है. उसका आप अगर theoretical simulation, theoretical study करना चाहते हैं analysis, you have to make a mathematical model. So उसका ये mathematical model है. इसके state variable है, right? So any physical system, thermal system, dynamic system, mean car, missile, anything. So ये इसके inputs क्या है? अगर हमारी car है तो उसके inputs motor, for example engine है, like अगर आपकी electric car है तो उसकी motor लगी हुई है, सही है. So input variable ये इनके inputs हैं.
और ये वेक्टर फॉर्म में होती है, एक इनपुट या काफ़ी सारी। और आउटपुट वेरिएबल इसकी रिस्पॉन्स है कि इनपुट है और ये इसमें से गो थ्रू, राइट, these inputs may go through the system dynamics. So we have output response, which we need, the output response which we need it, right? There is output variables. And for example, ये मोटर कमांड है, जैसे मैं गाड़ी की इलेक्ट्रिक कार की I will give the example. So first motor, second motor, right? And the back rear wheel drive है. So you have the velocity, position. So whenever x position, y position, velocity, x velocity, y velocity, so these are variables. So we have in this type of dynamic system, for general, we have basic usually three types of problems: analysis, identification, and synthesis. Analysis, what is in an analysis? In analysis, you have given u in time series, right? U for future, u input for future, x state variable, this model s, you know that, and you have u for future, you have know that you predict this, predict future of y, you predict output response. That is called analysis. You know this, you know this, you want to predict these, right? Identification, another field you might never hear it. Identification, system identification. You have a system, right? Given the time histories in timestamps may u or timestamps may y, right? So you have these inputs, these all time series inputs. मीन मोटर 1 का एक सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में क्या क्या स्पीड है, मोटर 2 का पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, फुल टाइम सीरीज में, और आपके पास ये भी है उसका, उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास उस टाइम स्पेंड में रिस्पांस क्या है वेरिएबल के, आउटपुट वेरिएबल का रिस्पांस तो क्या है. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द वेलोसिटी एट v टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, व्हाट इज द एक्सप्रेशन, व्हाट इज whatever you need it, right? What is the position of the body at time 1, time 2, time 3. So if you know these two, just inputs and outputs, and you have this knowledge, identification, system identification, you would find this model S, system model, or state space model, state variable, right? So this is the case of identification. Now synthesis, what is synthesis? Synthesis is given you and some desired y, अगर उसके corresponding आपको some desired y आपको पता हो, so you find S so that you find S model, so that you acting on the S will produce y. तो आपके पास u है, some desired variables हैं, then you have to find dynamic system model S, and आप उसको exaggerate करते हैं. आप दूसरे inputs के लिए अगर आपको ये पता हो तो आपके पास y आएंगे. So you have u and some desired y, find S so that you acting on S will produce another y, another types of outputs. So this is the general usually dynamic systems and the problems, right? We have sometimes we have analysis, we want to perform analysis, sometimes we want to know the system inside, what is the system model in mathematics form. You have to know, you have these inputs and outputs, and you want, there are some techniques, mathematical techniques, there are a lot of. So you find this system, and another is synthesis. You have this and some of the system, and you have to find output. सर ये एस थोड़ा दोबारा समझा दे सर, इसकी समझ नहीं आई. मॉडल जो एस हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं सर, तो ये एस इसमें क्या है सर? किस सेकंड में, आइडेंटिफिकेशन में? नहीं सर, तीनों में. यानी यू तो हमारे पास इनपुट वेरिएबल हुआ ना, और वाई हमारे पास आउटपुट है. तो ये we have three types. Yeah, so you have three types. In short, like we have three types of problem when we see dynamical system, right? When we study that dynamical system. So these are inputs, these are outputs. This is the system, right? इसके state variables हैं, या state space model है, या function model है, या anything else, polynomial model है, right? So your question is about what? Tell me your question. सर इसमें ये पूछ रहा हूँ सर, ये इनपुट जो यू है ये इनपुट वेरिएबल है, हम फाइंड करते हैं, और जो आउटपुट वेरिएबल है वो वाई है सर. ये एस जो हम फाइंड करते हैं ये क्या चीज़ है सर, मैं ये पूछ रहा हूँ. अच्छा, ये है सेकंड, आप ये इसका पूछ रहे हैं. आइडेंटिफिकेशन एक टाइप ऑफ नॉलेज है. When you face this type of problem, you don't know. Usually आप रियल में आपके पास एक तो न्यूटन लॉ, ये सारे लॉस को फाइंड करते हो ना,
अगर आप ये लॉ से आप अप्लाई करते हो और आप सिस्टम फाइंड करते हो, लेकिन लिटरेचर में, लेकिन आप रियल में फॉर एग्जांपल यू वांट टू फाइंड सिस्टम मॉडल A variable, I mean A matrix in system matrices, A, B, C matrices, you study that in the future. अगर आप system dynamics, उसको कहते हैं dynamic matrix, right? The system dynamics को find करेंगे, right? Then you have, you know this, these all in time stamps, time series, input variable and output time series. आपको ये दोनों पता हो, मतलब आप मोटर इनपुट से प्रोवाइड करते हो और आपके पास सेंसर्स पे वैल्यूज आ जाती हैं, राइट? वेलोसिटी की वैल्यू मुख्तलिफ आ जाती है, मुख्तलिफ टाइम स्टैम्प्स के लिए पोजीशन की आ जाती है, तो जस्ट आपको इनपुट मोटरों की स्पीड और वो आउटपुट वेरिएबल्स मालूम हो, तो आप इस नॉलेज से यू कैन फाइंड दिस मॉडल। इसको कहते हैं सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। आपने सिस्टम आइडेंटिफाई किया है, राइट? अंडरस्टैंड? यस सर, यस सर, यस तो सर। ये है, और ये दूसरे एनालिसिस है, ये आपको एनालिसिस की है कि गिवन यू, आपको यू पता है, टाइम सीरीज इनपुट्स पता है, आपके पास एक्स यानी ये सिस्टम पता है, आप फ्यूचर को यानी आउटपुट को प्रिडिक्ट कर रहे हो, फ्यूचर आउटपुट्स को करस्पॉन्डिंग टू दोज इनपुट्स, राइट? दोज इनपुट जो भी है गिवन, ये है एनालिसिस। और सिंथेसिस में ये है कि ये गिवन यू हो एंड सम डिजायर, ये डिफरेंट है इससे सम डिजायर वाई, देन आप फाइंड करते हो इस सिस्टम मॉडल को, ये मैथमेटिकल मॉडल को, या ये स्टेट स्पेस मॉडल, या ट्रांसफर फंक्शन, या पॉलिनॉमियल, वन ऑफ द सेम थिंग, एक दूसरे में चेंज भी होती रहती है मॉडल, यू कैन डू इट। सो देन फाइंड एस, सो दैट व्हेन यू एक्टिंग ऑन एस प्रोड्यूस वाई, those outputs, right? As us. यस सर, समझ आ गई। यस सर, क्लियर हो गए। So control system design में procedure क्या है? Usually what is the procedure? So yeah, very simple. Actually it's not mathematical stuff initially. हमारे पे का lecture रह गए थे output to it से. So design procedure in the process of designing a control system. Can you hear me, right? Atiq, Azad, and Yes, sir. Yes, sir, आवाज आ रही है। बाकी सारे के म्यूट कर दें। ओके, किसी ने पूछना तो अनम्यूट कर दें या पूछ लिया करें। इन द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग कंट्रोल सिस्टम वी सेट अप अ मैथमेटिकल मॉडल, राइट? ये मैंने कह दिया ना पहले कि हमें व्हेन यू वांट टू फाइंड अ कंट्रोल सिस्टम इन कंट्रोल लॉ, you have first need a mathematical model of the control system, I mean of that system, and adjust the parameter of compensator, in that control law की parameter को change करते रहते हो, setting time या जो एक एक चीज को चेक करते हो, रिस्पॉन्स देखते हो कि यार अब मेरा वो रिस्पॉन्स कंप्लीट हो गया कि नहीं, अचीव कर गया कि नहीं, फिर वो राइस टाइम या सेटलिंग टाइम ये सारी पैरामीटर, सिस्टम पैरामीटर चेंज करते हो और वो देखते हो, मीन पोल जीरोज आप लोगों ने नहीं सुनी, वो चेंज करते हो और देखते हो क्या सिस्टम रिस्पॉन्स है, राइट? So mean you have changed one particular parameter of the system and checked the response of this control law, or you can say compensator. So the most time consuming part, this में एक पकड़ लिया और सारी response को देख लिया, for example एक parameter पकड़ लिया और velocity को भी देख रहे हो, and you need to follow position also, two position है for example space plane motion में, two for example velocities हैं, चार parameters हैं, तो सब के लिए अगर एक parameter को check करते हो ना, तो अगर ट्रेडिशनल पुराने क्लासिकल कंट्रोल में ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, पेपर वर्क था, तो अभी कंप्यूटर मैटलैब की वजह से ये चीज़ आसान हो गई है और देखते रहते हैं ये रिस्पांस ग्राफ की शक्ल में और प्लॉट्स की शक्ल में, राइट? सो मैटलैब यूज दिस फॉर दिस चेकिंग द सिस्टम परफॉर्मेंस बाय एनालिसिस. Once a satisfactory mathematical model you have achieved or trained, the designer must construct a prototype. पहले एक प्रोटोटाइप बनाता है and test the open loop system. अभी ओपन लूप क्लोज लूप पढ़ा था ना कि क्लोज लूप एजाज जी सर, जी सर। क्लोज लूप के क्लोज लूप क्या था? क्लोज लूप वाज उसमें सर टू द इनपुट, राइट? यस सर, आउटपुट को आप दे देते हो, इनपुट में प्रोवाइड कर देते हो, तो वो तो पहले जब आपके पास मैथमेटिकल मॉडल आ जाता है ना, once you have it, then you check first not closed loop, okay? You check open loop. Means आप उसके पैरामीटर देखते हो, पोल जीरो ड्रा करते हो, जो भी पढ़ेंगे पोल्स और जीरोस, जो देखते हो कि क्या है, सिस्टम स्टेबल है क्या अनस्टेबल है। जो अभी नेक्स्ट में शायद मुझे मौका मिल जाए कि मैं तो ये इनिशियल पढ़ा दूँ ये अभी पोल एंड जीरोस, तो सिस्टम स्टेबिलिटी देते हैं कि यार ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, हमारा ये सिस्टम जो गाड़ी है या जो हीटर है, व्हाटएवर द सिस्टम, फिजिकल सिस्टम, तो आप उसको ओपन लूप देते हो, आप क्लोज नहीं करते हो. Once you have this open absolute stability,
स्टेबल है कि नहीं, देन आप क्लोज लूप मिला लेते हो, राइट। आप ट्रांसफर फंक्शन पढ़ोगे इस पे, क्लोज लूप के बाद आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगा और आप चेक करोगे कि फिर भी सिस्टम स्टेबल है और आपका रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस हो रही है कि नहीं। दैट इज द केस, राइट। तो फर्स्ट यू हैव टू चेक ओपन लूप, मीन आप उसके पोल जीरो ड्रॉ करें, देखेंगे कि स्टेबल है कि नहीं। जब वंस वो है तो दैट्स फाइन, देन आप वो आगे जाएं, लूप को क्लोज करें और फिर उसका ट्रांसफर फंक्शन देख लें और फिर उसके पोल जीरो ड्रॉ करोगे तो आप देखेंगे कि आपका सिस्टम फिर भी स्टेबल है कि नहीं है, क्लोज हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, तो वो आप दोबारा पैरामीटर चेंज करेंगे ताकि वो क्लोज लूप में भी सिस्टम स्टेबल रहे, ना कि सिर्फ ओपन लूप। ओपन लूप मीन आप आउटपुट को कंपेयर ही नहीं कर रहे हो ना, वो तो हम जस्ट पहले ये करना है ताकि आपका सिस्टम स्टेबल है बाय डिफॉल्ट मीन ओपन लूप। अच्छा, ये कि म्यूट कर लें, एक बंदे की माइक बैकग्राउंड साउंड आ रही है। ओके, so because of the neglected loading effect among the components, actually ये क्या एक्चुअल मॉडल से प्रोटोटाइप और थ्योरेटिकल जो आपने प्रेडिक्शन की है, थ्योरेटिकल आप सिमुलेशन करते हैं, राइट। एक्चुअल से अगर आप उसको अप्लाई करते हो प्रोटोटाइप पे, राइट, देयर इज अ डिफरेंस which were not taken into consideration. Because what is the difference? Because of its loading effect, non-linearities, distributed parameters and so on. I mean, आप जो एक्चुअल पे प्रोवाइड करते हो तो आप मुख्तलिफ चीज़ें, ऐसी चीज़ें आपको नॉन-लिनियरिटीज होती हैं, जैसे बैकलैश गियर्स में या प्रोसेस की नॉन-लिनियरिटीज, हीटिंग प्रोसेस या डायनामिक प्रोसेस नॉन-लिनियरिटीज को आप लीनियरली कंसिडर करते हो मैथमेटिकली, और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स बाद सिस्टम में मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स हैं या उसकी वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप उसको एज ए होल लंप मॉडल लेते हो, तो वो उस वजह से जो डिफरेंस आता है दैट इज एक्चुअली ड्यू टू दीज लोडिंग इफेक्ट्स। So thus first design may not satisfy all the requirement जो आपने स्पेसिफाई किया ना, requirement specification, वो जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट डिजाइन आपका satisfy करें। The designer must adjust the system parameter, ये मैं बोल चुका हूँ, and make changes in the prototype, फिर वो प्रोटोटाइप में चेंज करते हैं until the system meets the specification। आपकी स्पेसिफिकेशन मीट कर जाए, आपकी ओवरशूट्स, राइज टाइम, सैम्पलिंग सेटलिंग टाइम, स्टेडी स्टेट ये सारी अचीव हो जाएं, तब आप देखेंगे कि आपका आउटपुट रिस्पांस अचीव हो रहा है। मीन्स करिए आइडियल तो नहीं होता, लेकिन 90% 80% अचीवेबल। In doing this, she must analyze the trial। ये मैं कह चुका हूँ कि आप जब इनिशियली नहीं होता तो आप एक पैरामीटर चेंज करते हो, एक ट्रायल देखते हो एक पैरामीटर में, एंड देन रिजल्ट्स ऑफ द एनालिसिस मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू नेक्स्ट ट्रायल। तो उसका ट्रायल, उसकी जो रिजल्ट्स हैं उसको नेक्स्ट ट्रायल में फिर इनकॉर्पोरेट करो। इस तरह करके आपके पास ये डिजाइन प्रोसेस में बता रहा हूँ, डिजाइन प्रोसेस में बता रहा हूँ, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है। जी बोले। इकराम ने वो कुछ किया है, इकराम ने अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर ली है। Okay, so the designer must see that the final presentation performance। यहाँ इस ट्रायल में देखा is the design process, हम एक पैरामीटर को चेक करते हैं और उसके रिजल्ट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं, राइट, in the next trial, और देखते हैं, रिफाइन करते हैं, राइट। The designer must see that the final system meets the performance specification, वो रिक्वायरमेंट हमें अचीव हो रही कि नहीं, at the same time is reliable and economical। ऐसा ना हो कि वो हम चीज़ें चेंज करें, इकोनॉमिकल नहीं ना हो, एक्सपेंसिव हो जाए, और रिलायबल हो कि दोबारा, और रिपीटेबल हो, राइट, कि वो अचीव करें, एक दफ़ा हो जाए दूसरी दफ़ा नहीं, बार बार वो अचीव हो जाए। और मेन चीज़ है सिस्टम शुड बी स्टेबल। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, तो आप लोग समझ जाएंगे। अभी इनिशियली है तो ज़रा थ्योरेटिकल टाइप है। सो सेगवे इसमें देखेंगे आपने, अमेरिका में ये है स्पीड कंट्रोल एंड इसकी पोजीशन भी कंट्रोल, तो ये पुलिस इस्तेमाल करती है और लोग भी इस्तेमाल करते हैं इसको कभी कभी। सो एंड द लाइन फॉलोइंग रोबोट, अगर आप कोई मिनी प्रोजेक्ट में किया हुआ होगा किसी ने, तो एक लाइन फॉलोइंग रोबोट ये लोग करते हैं, तो दैट इज आल्सो कंट्रोल। मीन देखिए बाहर निकल रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है, तो यहाँ सेंसर लगे हुए हैं, इंफ्रारेड यहाँ लगे हुए हैं, लाइन, तो ये सारी जब वो बाहर निकलती है तो मोटर कमांड चेंज हो जाती है, इसको तेज करते हैं, अंदर करते हैं, फिर यहाँ से निकल जाती है, तो इसको कोशिश करना है कि इसी लाइन को फॉलो करें। सो दैट इज लाइन फॉलोइंग रोबोट।
ये यहाँ पे है, जैसे मैं जो वहाँ ले थी मेरी, तो वो एक लड़के कर रहे थे अंडरग्रेड वाले लाइन फार्मिंग रिपोर्ट, अब्बास, यस सर। मयूर, ये वो कर रहे थे, ये वो लैब थी जहाँ मैं बैठता था। सो लड़के अंडरग्रेड वाले आते थे करते थे। सो ये फर्स्ट लेक्चर का है। आई थिंक मैंने इनिशियली दूसरे का थोड़ा सा ऊपर वाला करना है। ये नजर आ रहा है, यस लेप्लास ट्रांसफॉर्म टेबल्स। तो ये मैं सेकंड में भी कंटिन्यू करूंगा। सो अपेंडिक्स ए फर्स्ट प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सो अगर आप गेटा में जाए ना तो अपेंडिक्स है ए है, वो आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म टेबल और सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है। So a complex function of a complex variable, okay? So then it present table of Laplace transform आपको दिए होते हैं सारा, और टेबल आप वहाँ से कॉपी भी करते हैं अगर एग्जाम में बंदा जाता है तो, या होमवर्क असाइनमेंट में तो वो टेबल्स भी यूज करता है, राइट? तो पीछे बुक में है और इंटरनेट में भी है Laplace transform and properties of the Laplace transform. So finally it presents frequently used Laplace transform theorems, which theorem है and Laplace transform of pulse and impulse function. अच्छा, फंक्शन में थोड़ा कराऊंगा स्टेप इनपुट और स्टेप फंक्शन और सारा कुछ थोड़ा ब्रीफली, और पल्स और इम्पल्स फंक्शन क्या है ये भी थोड़ी ब्रीफली देखेंगे, स्टेप, रैम्प एंड पल्स, इम्पल्स वगैरह. So what is complex variable? You guys know, right? Atik. Yes, sir. Has a real part. This is a complex variable S. So it has a real part, sigma 1. Can you hear me? Atik? Abbas? यस सर। अच्छा, काफी अटेंडीज है, और लोग हैं हमारे साथ? यस सर है। गयूर? Yes, sir. Yes, sir. This is the real part, sigma, right? And imaginary part. This is the imaginary part with j imaginary term, right? Iota या j. So this is the complex variable. हम इसको draw करते हैं complex plane पे, so like that. So on real axis, the real part, right, of the complex variable, and on imaginary axis we have this with j omega. J is actually -1 under root, right? This is operator. So when you multiply this j operator, आपका ये variable जो भी variable है ये आप एंगल चेंज के 90 पे चला जाता है, फिर आप मल्टीप्लाई करें ओमेगा के साथ, ये यहाँ आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करें तो ये 270 पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इमेजरी के माइनस में आ जाएगा, फिर अगर जे मल्टीप्लाई करें उसी वेरिएबल के साथ ओमेगा के साथ तो ये यहाँ आ जाएगा, राइट? इसी तरह वेरिएबल के साथ. तो ये एक ऑपरेटर है ये जे. So both of which are constant, real and imaginary part, these are constant. If the real part and imaginary part are variable, a complex quantity is called complex variable. तो ये complex quantity कोई भी ये complex variable कहलाती है. In the Laplace transformation, we use the notation S, complex variable, as the complex variable, which is in this form, sigma j omega 1. अगर S1 है तो sigma 1 j omega 1, S2, so we have L sigma 2 real part and j omega 2, where sigma is the real part and j omega is the imaginary part. So the function of the complex variable is called complex function, right? We have of a complex function, we then denoted with the g of s, a function of complex variable s. It is a function of complex variable. It has a real part, g sub of x, and imaginary part, j into g sub of y. So g sub of x and g sub of y are real quantities. This is totally imaginary, right, with j. But at g of x and g of y, just these are real quantities. So the magnitude of g of s is then we denote with this these bars, 2 bars, and
we take it under root g of x square plus g of y, g sub y square. So this is the magnitude of complex function in this form. So an angle we find tangent inverse g of sub y by g sub x. G sub y by g sub x. So angle is this one. Theta g sub y by g sub x, right? This is angle of the complex function. So we are in previous slide we are saying complex variable. So complex variable of and complex function of the complex variable we cannot draw it, right? So this is actually complex function. And iska the angle is positive counterclockwise. So the complex conjugate of this function g of x is g sub g bar, right? G bar g of x minus के साथ, ये plus के साथ है ना, this is plus, so ये minus के साथ, तो ये इसका complex conjugate of this complex function g of s. So complex function commonly encountered in linear control system analysis अभी जो हम पढ़ेंगे या Laplace transform आप देखते हो तो ये complex function प्रेजेंटेशन सर फिर नहीं शो हो रही, क्या हो रही है सर स्लाइड शो नहीं हो रहे सर. कौन बात कर रहे हैं सर मैं हूँ इजाज. तो मैं अभी पॉइंट अप करने वाला हूँ. तो ये complex function we denoted with GFS which is actually the function of complex variable. तो ये है complex function commonly encountered in linear system. We study it. और ये single valued functions हैं. बिना अगर इसको आप evaluate करें ना तो इसकी वैल्यू एक आएगी single valued, okay? of s variable, complex variable. पीछे वाली स्लाइड s ये तो फंक्शन है ना, ये तो फंक्शन है, इसको ड्रा किया हुआ है. तो of complex variable s and are uniquely determined for a given value of s. और ये uniquely determined, okay? एक given value of s के लिए ये uniquely determined है, means इसकी multiple वो नहीं होगी, uniquely determined, unique value होगी. So complex यहाँ तक मैं पढ़ लेता हूँ, फिर आगे next class. So a complex function is said to be analytic. We call it analytic in a region, right? Or in a region or s or region s ना कहो फिर आप confuse हो जाएंगे. In a region or, right? इसके करीब करीब अगर complex function है और वो analytic कहलाता है जब when you g of x if g of x and its derivative, g of x की derivative वो exist करें, okay? For example, ये function है 1 और s plus 1, complex function है, चूंकि complex variable है ना यहाँ पे denominator में, तो complex function है. इसके derivative है, exist कर रहे हैं g of s derivative minus 1s plus 1 square. Derivative exist करें, right? So वो complex function analytical कहलाता है. अब वो points in s plane, in complex plane, s plane, at which the function g of x, this function is analytic, are called ordinary points. While points in the s plane at which the function is not analytic are called singular point. वो भी देखते हैं. अब next ये example है. एक्सक्यूज मी सर. पीछे चला जाता हूँ, एक मिनट. जी बोलें. सर ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, मतलब जो कंट्रोल ये हम कंट्रोल सिस्टम में सारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन इस्तेमाल होते हैं. एक्चुअली व्हेन यू डू एनालिसिस इन रियल टाइम वेरिएबल्स x y या इस तरह की वेरिएबल्स में उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन उसको सॉल्व करना इज cumbersome, is very difficult. So you have to change into Laplace, you have used Laplace transform to change into complex variable, right? Laplace transform से उसी फंक्शन को जो रियल टाइम में डिफरेंशियल इक्वेशंस की मुश्किल होती है, रियल टाइम को आपने रियल टाइम वेरिएबल्स को ये वेलोसिटी वाली और इसके सारी s उसको s में कॉम्प्लेक्स में हम भी देखते हैं ना क्या होगा. जैसे x डॉट जो है ना वेलोसिटी वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में s कहलाता है, राइट? सो इसी तरह x डबल डॉट s डॉट कहलाता है. तो इसी तरह उसको जब आप ट्रांसफॉर्म करते हो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में अपनी आसानी के लिए फॉर योर ओन इजीनेस, so then you can solve the problem and then again आप पीछे चले जाते हो, again अपने solve for the purpose of solving, तो आप उसको algebraically solving आप आसान हो जाती है. then दोबारा inverse Laplace से इस्तेमाल करके वापस original real function में real variable में आ जाते हैं, right? real time variables में.
तो ये है यूज करते हैं हम। तो आप वेलोसिटी को या किसी चीज को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में चेंज कर लेते हो, राइट। तो आप इसमें एनालिसिस आसान होती है और वापस अगर आप इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल करके आप वापस आपकी वो कंट्रोल सिस्टम में जो भी कैलकुलेशन है वो आसानी हो जाती है इसमें। So that's a function क्या function of velocity profile, function of acceleration, or function of position. Function is a function, right? Mathematical model. कोई mathematical model है वो एक function है, right? कोई किसके लिए किसी खास आउटपुट के लिए एक फंक्शन बनाया हुआ है आपने, तो वो एक वेरिएबल्स है, रियल टाइम में उसकी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है और डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व होती है। तो आप उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वजह से उन वेरिएबल्स को एस में ले जाते हो, जिसमें आप सिंपल अलजेब्रिक काम करते हो। सिंपल अलजेब्रिक से जब काम हो जाता है आपका, सॉल्व करते हो प्रॉब्लम को, कंट्रोल सिस्टम प्रॉब्लम को वापस ले आते हो एंड रियल में दोबारा आपकी रिजल्ट्स आ जाते हैं। So that is the function with analytic when when this function is said to be analytic if g of x and all its derivative exist. अब ये देखते हैं क्या है जिस पे एग्जिस्ट करते हैं उस पॉइंट्स को ऑफ एस डोमेन, उस पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और ऑर्डिनरी पॉइंट्स, और जिन पे एग्जिस्ट ना करें इन्फिनिटी पे चले जाते हैं, देन उसका उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, सिंगुलर पॉइंट्स। सो सिंगुलर पॉइंट्स वो एट विच द फंक्शन दिस जी एफ एक्स आर इट्स डेरिवेटिव दोनों और या डेरिवेटिव अप्रोच इन्फिनिटी आर कॉल्ड पोल्स। वो सिंगुलर पॉइंट्स, राइट, वो एनालिटिक फंक्शन जिसके वो फिर उसके सिंगुलर पॉइंट्स, राइट, जो इन्फिनिटी पे चले जाते हैं उसको कहते हैं पोल्स, और वो सिंगल पॉइंट जिस पे फंक्शन इक्वल टू जीरो, ये एनालिटिक फंक्शन इक्वल टू जीरो और कॉल्ड जीरोस। अंडरस्टैंड? ये हैं जीरोस इस फंक्शन के, जैसे ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। अब ये मिसाल आगे देखते हैं कि जीरोस कौन सी है, पोल्स कौन सी है इस एनालिटिक फंक्शन की, राइट। जीरोस कौन सी हैं और पोल्स कौन सी हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो ये है, ये एक ये एक जनरल फॉर्मेट है ना, ये जनरल फॉर्मेट है ये इसके ये जो है यहाँ एक फंक्शन है, polynomial in numerator and then polynomial in denominator, we have factors, right? So this is general format, pole zero pattern. तो s plus 1 s minus 2 इसको आप फैक्टर में ले जाते हैं और s3 का ये बनता है, राइट। सो when you have, ये अभी करेंगे किस तरह है। So you have this type of polynomial and there's factors product form. So you have numerator में ये और ये product के symbol है, right? So where term s plus zi, ये s plus zi, तो ये यहाँ zi, s plus zi, ये है zi zeros 1 and minus 2, ये zi है। ये है factors of the numerator polynomial, इस polynomial का numerator polynomial, and the term s plus pi, ये product term, right? Product term, हर एक product term, and इसके सारा product term, तो ये product term 1 2 3, so that is the factors of the denominator polynomial. So they are those values of the complex variable s for which gf is 0 are called zeros of each in the previous slide, right? Zeros कहलाती हैं, और those values of the complex variables s for which complex function in an analytic function is infinite are called poles of g। ये दोबारा रिपीट हो गई है। तो इसमें देखें zero of ffs क्या है, zero of ffs are at s minus 1, right, s minus 1 2 and infinity है क्या नहीं। s minus 1 अगर पुट करें तो ये जीरो हो जाता है, s minus 1 minus 3 6, ये जीरो हो जाता है पूरे का पूरा, s minus 1 पुट करें इसमें, सही है, आवाज आ रही है? यस सर। तो zeros of ffs, इन zeros इन complex variables की वैल्यू zeros क्या कहलाती हैं, s minus 1 2 plus 2, ये माइनस है ना, plus 2 and infinity। अगर आप ये पुट करेंगे तो फंक्शन से क्या आएगा, gfs will be 0। आप देख लें खुद ही, ये वो वैल्यूज हैं, ये और इंफिनिटी, ये जीरोस कहलाती हैं ऑफ दिस फंक्शन, जीरोस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, राइट। यस सर। कॉम्प्लेक्स फंक्शन ffs,
या FFS कह लो या GFS कह लो, जो भी है, तो ये इसकी जीरोस कहलाती हैं। ये S X पोल -S वेरिएबल -1 2 और इन्फिनिटी, ये जीरोस कहलाती हैं आप दिस कम्प्लेक्स फंक्शन। और जीरोस क्या होगी? जीरोस वो कम्प्लेक्स वेरिएबल्स होते हैं, जीरोस वो कम्प्लेक्स वेरिएबल होते हैं जिसके लिए GFS इज जीरो। इस फंक्शन, ये फंक्शन जीरो हो जाता है, आप देख लें, इसमें से डालें, आप देख लें, राइट? जीरो आ जाता है कि नहीं? आवाज टू डालें, टू यहाँ जीरो हो जाता है, ठीक है? टू यहाँ जीरो हो जाता है। और इन्फिनिटी डालें, S पे इन्फिनिटी डालें तो सबका इन्फिनिटी हो जाएगा। समथिंग बाय इन्फिनिटी बाय समथिंग इज जीरो। S जीरो। अच्छा, पोल्स क्या है? पोल वो कहलाती है, वो कम्प्लेक्स वेरिएबल्स की वो वैल्यूज हैं, पोल्स। ये पोल्स है, ये S वाली -3 पोल है, -1 -j, एक ये पेयर, कम्प्लेक्स पेयर, एक ये पोल है, और ये कम्प्लेक्स पेयर, ये पोल है। 1 2 और 3 पोल्स हैं इसके, 3 जीरोस एंड 3 पोल्स, सही है? अंडरस्टैंड? तो इस पे क्या, इस पे वैल्यूज इन्फिनिटी के जाएंगी, ठीक? अगर आप ये पुट करें यहाँ पे, तो -3 पुट करें, -3 पुट करें तो ये वैल्यू इन्फिनिटी भी जाएगी। क्या यहाँ तो -3 पुट करें, यहाँ तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, यहाँ पे -3 पुट करें तो क्या आएगा? जीरो हो जाएगा ना, ठीक? जीरो हो जाएगा ना? आवाज आपके बैकग्राउंड में साउंड नहीं है, नॉइज नहीं है, तो आप ऑन करें, खैर है, ताकि वो रखें। राइट। तो ये सारा सिस्टम जीरो बाय वन समथिंग बाय जीरो जीरो इन्फिनिटी। तो वैल्यू GFS की, यानी FFS या GFS ना, एक ही चीज है, इज इन्फिनिट। वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगी नहीं इस फंक्शन की, यस। राइट? तो ये कहलाती है पोल्स ऑफ दिस फंक्शन FFS। तो मैंने FFS लिख दिया बाद एग्जांपल में, लेकिन वही GFX कहलाता है ना, जो भी आप नाम दे, कोई मतलब नहीं, सही है ना बॉस? यस सर। गयूर यस सर। हाँ, गयूर। तो पोल्स कौन सी हैं किसी फंक्शन की? वो वेरिएबल्स कम्प्लेक्स सर जहाँ वेरिएबल पे है, है ना वो जीओएस की फंक्शन वैल्यू जो है ना वो इंफिनिटी पे पहुंचते हैं। जीरो पोज, हाँ पोज इन्फिनिटी है, और जीरो पे जीरो पे। तो ये तो आप जीरो अगर पे शॉर्ट पहुंचते हैं उसमें। हाँ, फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो आप ये फाइंड करेंगे, अगर कोई मैं सिंपल गयूर, अगर मैं कोई सिंपल क्विज दूं और इस तरह के यार पोज जीरो कौन सी है, तो आपने फिर ये आसानी से फाइंड करना है, राइट? किस पे ये वैल्यू चली जाती है जीरो, किस पे, सही है ना? और ये गयूर, ये एक जनरलाइज्ड टर्म है, ये प्रोडक्ट फॉर्म है ना, दिस इज जस्ट, ये इसको शो कर रहा है, इसको शो कर रहा है, ये इसमें लिखते हैं, ये जनरलाइज्ड जीरो पोल पैटर्न है, ये पैटर्न है। तो ऊपर वाले न्यूमरेटर में क्या कहलाते हैं? जीरोस, और डिनोमिनेटर में क्या है? पोल्स। देखें, एक ये है -1 एक -2, तो उसका अपोजिट ले लो 2 + 2, एक +2, राइट? ये एक सोल्यूशन है, ये एक वेरिएबल है, कम्प्लेक्स वेरिएबल, और एक इन्फिनिटी। तो देखें, अगर ऊपर इन्फिनिटी डाल दें और डिवाइड बाय समथिंग इज जीरो, तो इन्फिनिटी ऊपर है, तो ये है जीरो, और ये है जीरोस, और पोल्स देखें इस फंक्शन की, पोल्स -1 देखें, ये है +1 तो -1 इसका अपोजिट, और इसका अपोजिट इसका अपोजिट -1 -j, राइट? और एक तीसरा पोल कौन सा? ये तीसरा पोल ये है -1 + j, तो ये पेयर है। तो 3 पोल्स हैं और 3 जीरोस हैं, सही है ना? और ये फंक्शन है, और ये किसी मैथमेटिकल मॉडल है, किसी प्रोसेस का, किसी भी चीज का एक मैथमेटिकल मॉडल बना हुआ है, सही है? अंडरस्टैंड? यहाँ पे देखिए -1 है, ये जीरोस है ना, 2 है, तो याद रखें इन्फिनिटी, और अब बस आप ये याद रखें -3 -1 -j एक पेयर, -1 + j दूसरा पेयर। तो इसको ड्रॉप क्या करोगे? इसको जीरोस वाले जीरो ये के लिए जीरो ये है -1, और दूसरा इसके ऊपर है -2, और एक इन्फिनिटी पे चला जाता है, राइट? पॉजिटिव इन्फिनिटी यहाँ पे कहीं है। और पोल्स कौन से हैं? पोल्स पोल्स एक -3 था ना बस? यस सर, -3 -1 -j -1 ये 1 कर लिया, तो दूसरे दरमियान में 2, और ये -3 एक पोल्स को क्रॉस से मल्टीप्लाई करते हैं। The location of a pole in S plane is denoted by cross, and the location of a zero in the S plane is denoted by zero, right? So -3 और 2 कॉम्प्लेक्स हैं, एक यहाँ पे और इसका ऑपोजिट यहाँ पे। यहाँ वाला क्या है? -1 + j,
-1 प्लस जे, एक ये है और एक है -1 माइनस जे, माइनस के। -1 और माइनस जे, ये सही है ना। यस सर। तो 3 पोल्स हैं और 3 जीरो, एक ये है और एक इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी पे, सही है। अंडरस्टैंड? यस यस सर। अंडरस्टैंड यू इब्राहिम, अतीक, एवरीबॉडी? यस सर। चले यहाँ तक आई थिंक काफी है।